अरे क्या बात है, थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू आलोक. हाँ गए अल्पा, थैंक यू फॉर कमिंग, नाइस टू सी यू. अच्छा लगता है, मेरा ही क्लब है. मालूम है लेकिन नाच कर गई थी. चलो ना, when you must have read about this topic, when she must have sent on WhatsApp, तो सबको लगा होगा ना बड़ा ड्राई टॉपिक है यार, इस पे क्या तो टॉक करना है. But we are celebrating 75 years of our republic, and Constitution on 26th of November will be completing 75th birthday. So on that occasion, on this whole 75 Amrit Mahotsav Kal of Constitution and Republic, so this is a good time to go through our Constitution. Naturally, it is a dry subject, but I guarantee you at the end of the session, you will not feel dry at all, and you will feel great pride, and you will feel maybe a bit embarrassed also कि मुझे क्यों नहीं मालूम था इतना. I can guarantee you, यहाँ तक तो बिल्कुल braggingly बोल सकता हूँ कि 80% of these things are not known to each one of us. That happened to me also. Once I came across a few things accidentally, and I was surprised कैसे हो सकता. Then I started digging, and I realized कि भाई बहुत ज़्यादा है यार जो हमें मालूम ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? And then of course full study for about 5 to 6 months happened, and here I am to share these things to you. So two types of written constitution. One is a codified constitution, second is uncodified. What does it mean? Uncodified means you will be shocked to know there are countries with constitution written in various different documents, and it has not been assimilated in one single document. ऐसा भी है. Doesn't gel well, है ना? कि आधा लॉज इधर है, कुछ लॉज इधर है, कुछ लॉज एक्ट में है, कुछ लॉज वो ट्रीटी में है. There are countries with such kind of constitution. That is an uncodified constitution, and the parliament has the authority to change it as a sovereign because it is the supreme power and it is non-judiciable, which means judges cannot challenge the parliament's ability to change it in uncodified. So naturally the question comes, which constitution is uncodified? Any example? Out of so many countries. Very popular country. I think USA. USA? No. UK? और कुछ ना कुछ तो तुक्का बैठने वाला है. Absolutely right, sir. क्या बोलते हैं उसको? नाम क्या है? UK का कॉन्स्टिट्यूशन? No. अरे क्या बात है, कौन बोला? You only said to Magna Carta? Super. A big hand to him. Big hand to him. Lovely. Very rarely this answer is being given. हाँ नहीं, yes, sorry. थोड़ा आप पकड़ के ध्यान लीजिए. So it is Magna Carta, and there are few laws in some treaties, few laws in some MOUs, and so on and so forth. It is not in a single book. That is too much, है ना? चलो. What is so unique about this Constitution of Monaco? आप क्या लगता है? ये अपनी मर्जी से बदल देगा. The picture gives a clue. Certainly now I am resting on you, ना? नहीं, थोड़ा. That is a clue. Military rule? No. Then no constitution. Or there is a price of that? Price of? No. Monarchy? हाँ, लेकिन something unique. It is the most unique constitution in the whole world of Monaco. It is the shortest constitution. 3,800 words. No, that is a clue. है ना? मस्त है. Which constitution is the longest written? Codified. Now you understand codified, right? Longest written, codified, oldest national constitution. Of course, now it is USA. अब ये साल बताओ कौन सा? 200 साल हो गए. अब अंदाज ऐसा फेक लेकिन वैलिड फेक होगा. 1789. ठीक है? That is the oldest codified constitution. ठीक है? Now this is a constitution which is very unique. The country or the state is most serene Republic of San Marino. Now see the beautiful name of a republic. Most serene Republic of San Marino. ऐसे भी नाम का एक स्टेट है इंडिपेंडेंट. कहाँ पे है मालूम है? Anyone by any chance has gone to Italy? It is a state in Italy. इसकी क्या खासियत है कॉन्स्टिट्यूशन की? बाई चांस पढ़ने में आया होगा तो
It is the oldest constitution in the world which is surviving till today. 1600s. Okay? Sure. Next. Let us start with our Indian constitution now. So, let us just briefly understand the fundamental rights. There are 6 groups of fundamental rights. We all know about this, hai? Right of equality, right of law, religion, employment, right to freedom, freedom of speech, freedom to vote, right to freedom of religion. I can choose any religion I want, race and all that. And right of culture, right of education. There are 2 more fundamental rights. Right to justice. Right to justice आ गया इसमें, equality में आ गया. Speech भी आ गया इसमें, freedom of speech आ गया. Right to work. Right to work is also profession, practice. अजी? है ना, ये तो आएगा पूरा, अलग ही है. और क्या है? Right to get justice. Justice. उसका उल्टा कुछ है? Right to strike. और इसका opposite what you are saying? क्या opposite हो सकता है? You are not getting? Injustice. हाँ, कहाँ पे होता है? उसका दूसरा वर्ड है कुछ? नहीं, punish नहीं. Injustice हो रहा है. Forced something. It is a right against exploitation. You are getting exploited. It is a totally an injustice. Child labor, जो भी टाइप के exploitations है, उसके लिए special fundamental right है. And there is one more fundamental right which is very unique to India and as a democracy, which you and me can utilize that. इतना fantastic. ये भी हमारे हाथ में है, लेकिन that gives real power. Right to information. नहीं वो आ गया उसमें, right to vote उसमें आ गया, इसमें आ गया. Right to vote. आ गया उसमें. Already it has come somewhere. Cultural, educational rights में आ गया. Equality before law. Equality before law. No. क्या लगता है बस? अल्पा? हाँ? Each one of us can use that. Of course, we can use all these laws. Right for information. थोड़ा और उसका expansion करो. It is part of it. Right to education. हाँ वही आती है, लेकिन Right to education. आ गया सर, वो तो पूरा अलग है. It is a right to constitutional remedies. Can you believe each and every law which is there, you can request a remedy as a citizen of India. बकायदा पूरा अलग से fundamental right दिया गया है. माने I and you can file a PIL and ask if this has to be changed, and they have to take it. क्या fantastic है ना? It is not so easy in most of the countries, huh? So these are the fundamental rights. So friends, our constitution is a live document. It is a live document. At the end of the session, you will agree to it, and it has a personality of its own. It has a charisma of its own. 100% you will agree to it at the end of the session. So let us understand that this personality has been stamped. It is a beautiful stamp from India Post on Constitution, and that is the reason. So let us open the gates of our mind to know this personality, because we are the Constitution and the Constitution is us. And this is important. It is not what you look at that matters. It is what you see in what you look at. अगर मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, इतना ड्राई लगता है ना वो बुक, आई विल जस्ट फ्लिप थ्रू दिस एंड कीप इट. नॉट इवन 30 seconds I like hold it in my hands. या मत मैंने. Because I have a habit to look at some things which I just look at, and I already have assumed it is so dry a subject. But if I go through it and understand the history, then it is actually what I'm seeing in that, what I'm looking at. And that matters in life. It is in everything. It is with a person also, it is with anything also. Here we are talking about the Constitution, and it is in here also. So let us start the story from 1944, 3 years before our independence. Before Constituent Assembly was formed, we must know about this person, M.N. Roy. Anyone?
These are the people who are unsung heroes. इनका contribution इतना बड़ा है कि आप हैरान हो जाओगे. Any idea? Postage stamp बना है उन पे. इसका मतलब बहुत important personality है. Friends, he is the one who actually is M.N. Rao, the founder of Communist Party of India, and he is the one who gave the whole idea of constitution by publishing a draft. Now we don't know this कि भाई constitution बनाने के पहले जो drafting committee बनाई थी, उनके पास already एक draft था, 3 साल पहले बना चुके. It may not be covering everything, but there was a good amount of draft available to start with. That is the contribution of Mr. M.N. Roy, who was the founder of Communist Party of India. And then 9th December 1946, this is a historic photograph for us because the Constituent Assembly was formed on 9th of December 1946. These are a few historic photos of the first meeting. And that time, देखिए गांधी को कि कितना कॉमन था ना, तो that is what we see here. Now, 9th of December के बाद में जब Constituent Assembly बनी, तो this was the seal of the Constitution, and you can see here India and Pakistan is together because obviously it was not partitioned that time. How many members were there? 389 members were there in the Constituent Assembly, which today is the Parliament. उसी का modification is the Parliament. बात है Constituent Assembly क्यों बनाई गई? हाँ जी सर जी. Princely states. हाँ? Because of princely states. No. Why was Constituent Assembly formed? For the first reason, क्या हो सकता है ऋषिकेश? Constituent Assembly means a group of people who will eventually form the constitution. Isn't it? Absolutely right. It was formed to frame the constitution, and therefore it was called the Constituent Assembly. ठीक है? 389 members था, ये उनका seal था, and that showed the unpartitioned India. But whether the people knew that the freedom is imminent, I mean, by that time it was decided. नहीं मालूम तो नहीं था, लेकिन बना दिए थे. मैंने अच्छा खासा पावर आ गया था अपने हाथ में. And Britishers को अंडरस्टैंडिंग कि इनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. Anyone yes ये तो बता. Who is he? Menon? एक जगह पॉइंट है. Menon? हाँ. मोहम्मद अली जिन्ना. खतरनाक. This Krishna Menon, architect of the Indian foreign policy. He was a defense minister from 57 to 62. What was his contribution? He contributed so much for our constitution. बहुत basic काम किया उन्होंने. He created the Constituent Assembly of India. He is the person who created it. And there's a very super story about him. He gave a speech in the United Nations in 1957. And he's the one person who also has 2 postage stamps released on him. He's so important a person. और जब कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो पहला पेज आता है, उसको कहते हैं प्रीएम्बल. दैट ड्राफ्टिंग जो वर्डिंग है हैज बीन डन बाय हिम, एंड ही इज द वन हू फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा. एंड इन द यूनाइटेड नेशन ही गेव समथिंग यूनिक व्हिच इज स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. एनीवन? आपको मालूम है सर, सीनियर लोगों को. He gave the longest speech in the United Nations ever. 8 घंटे का talk. And he collapsed there completely and he was hospitalized for 3 days after the speech. Speech किसके लिए था मालूम है? कश्मीर हमारा है ये प्रूव करने के लिए. 8 hours. 8 hours to defend Kashmir as a part of India. ये level थे. This is the way people have worked. We have to understand the gravity and what must have gone through all these things. 8 घंटे का स्पीच बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए तुम्हारे पास? कितना प्रूफ चाहिए? क्या स्टडी का लेवल और डेप्थ होगा यार? And that is what that contribution is there. He has 2 postage stamps. He is so important a person. Okay. 2 days later after formation, Dr. Rajendra Prasad was elected the president of the Constituent Assembly. We know this. And then 2 days later, 13th, Friday the 13th, what happened? Nehru ji proposed something which is known as the objective resolution, which became the form or which became the preamble. Now ये word बड़ा heavy है, objective resolution. Let us simplify it. Objective means what? Objective life का क्या होता है? Goals, target. Objective resolution म्हणजे I resolve my target in my life. The objective resolution is here for the country. So I resolve these targets, objectives for my country.
वो क्या था? That became the first page of the constitution. उसका ड्राफ्टिंग सर ने किया, जो पहले मैंने बताया, कृष्ण मेनन। लेकिन जो ओरिजिनलिटी थी, it was by Nehru. That is why it is important. And then who is Sir B.N. Rao? This is shocking. नाम भी नहीं खिला देगा आपने, नाम भी नहीं सुना। ये तो ट्रेजेडी है यार। क्यों नहीं बताया हमें मालूम नहीं भाई। You will be shocked to know this. नाम किसी ने सुना नहीं, कितने लोगों ने नहीं सुना हाथों पर? Oh my God. इसमें बताया नहीं। ठीक है। You will be shocked to know this. He was a jurist, okay, and he was chosen as the advisor for the Constituent Assembly and the Constitution. ठीक है? अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एडवाइजर का कितना इंपॉर्टेंट काम है कि इतने साल ज्यादा हमारे कास्ट और क्रीड है, उनका बैलेंसिंग होना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बैलेंसिंग करना इतना इजी है क्या? नहीं। Then he traveled to 4 countries to talk to all the jurists, judges, वगैरह की how to make the laws with such a diversity in India, where it will माने feed to every community or every caste or every tribe. इतना होमवर्क गया 1.5 साल का, and then what he did will shock you to the core, friends. He had prepared a draft constitution. What does it mean? A whole draft of the constitution was prepared by Sir B.N. Rao and given to the drafting committee headed by Ambedkar sir. हमें जो लग रहा है कि अंबेडकर साहब ने पूरा बनाया, ऐसा है ही नहीं। रियलिटी नहीं है, मालूम है ना। ये प्रॉब्लम है कि द होल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड 1944 में पहला, उसका मॉडिफिकेशन करके 1.5 साल के मेहनत के बाद इनका, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई कि इसमें अमेंडमेंट्स करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करो, जो करना है करो। दैट इज व्हाट हैड हैपेंड, एंड ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस वर्क फॉर 2 years. He is Sir B.N. Rao. Sir is a padvi given by when you are knighted by Queen Elizabeth. वो लेवल के लोग हैं, ये लेवल का कंट्रीब्यूशन है। We are not knowing for what reason we don't know. But it was never told to us कि भाई ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया। He is the forgotten architect of the Indian Constitution. Constitution को अगर एक पॉइंट पकड़ा जाए तो one side is Baba Saheb Ambedkar, definitely he is a role, but the other side is Sir B.N. Rao. Equally important in that point. बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बना था कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, it had 7 members. He was the chairman of this committee. But see the problem with this committee. One of the members resigned for some personal reason. One died. One was away in America. One was busy in the respective state where he was there. And 2 of them were so ill many a times. Sick leave ही चलता था. And finally they used to die also. They were replaced also. No one was useful to Baba Saheb Ambedkar. And therefore he is rightly said as the father of our Indian Constitution. समझ रहे हो? And therefore you have to understand that he is the forgotten architect, Sir B.N. Rao, and he is the father and architect together has made the Constitution of India. Then why Krishna and B.N. Rao were not included in In this committee where they were. नहीं, वो होगा, कुछ जरूरत नहीं होगी, maybe. नहीं, that we don't know yet. But maybe there was no need also. ऐसा भी हो सकता है. They have played their role already. ऐसा हो सकता है. इतना डिटेल तो कहीं पे दिया नहीं है कि why they were not included. But I'll try to think, and if I get an answer, I'll definitely share. So Baba Saheb Ambedkar studied about 60 constitutions, 60 countries का constitutions before he modified whatever amendments were to be made. So what did he take from British Constitution? Anyone? ये बहुत मजेदार चीज है। आपका देखिए, what you are looking at is a book. What you see in that book is the whole idea. British Constitution से क्या लिया गया है? Maybe skeleton. IPC लिया नहीं, होगा। हाँ? IPC IPC no. Fundamental rights no. We took from the British Constitution the concept of a cabinet, parliament, cabinet ministry. ये पूरा जो concept है is from British. ये parliament होना चाहिए, cabinet ministry होना चाहिए. Okay, what did we take from French Constitution? Beautiful 3, बहुत super, बोलते हैं ना sexy voice है, एकदम मस्त मजा आता है. I don't know.
The 3 words in the Constitution. बहुत famous है एकदम. नहीं पता ना इसके लिए तो सीखने को है। Right to life. नहीं single 3 words. Sovereign Socialist Republic. नहीं वो देखो. It is liberty, equality and fraternity. है ना? We have heard about these words. This concept has been taken from French Constitution. What about what we have borrowed from USSR Constitution? That time it was USSR. हमारा जो प्लानिंग होता है कितने सालों के लिए होता है? तो the 5-year plan concept पंचवर्षीय योजना has been totally taken from USSR. Okay, what has been taken from Japanese Constitution? It's a beautiful concept. सोच के देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसकी भी लॉज है. Who will govern Supreme Court? Laws. नहीं तो वो तो बिना लगाम के घोड़े की जैसा कर सकता है भाई. This concept has been taken from Japanese Constitution. What has been taken from German? Classical of German. अटैक करेंगे तो इमरजेंसी आ गया तो there will be no fundamental right. ये सब कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है. Fantastic ना? है ना? What has been taken from Irish, Ireland? ये थोड़ा डिफिकल्ट है. Directive principles of state policy. अब ये थोड़ा भारी है, एकदम नींद आता है इसमें. तो थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं. डायरेक्टिव मतलब क्या गीता? I direct guidelines. Principles, fundamentals. ये भाई लाइफ के फंडे. फैमिली में हम क्या बोलते हैं? These are the directives for the family. Principles of state policies. कौन सी पॉलिसी चाहिए वर्किंग के लिए? This means this whole concept is for the welfare of the people, and this whole concept has been taken up from Ireland. उनके यहाँ से. Okay, what has been taken from USA? थोड़ा मॉडिफाई करिए. You are right partly. और कुछ? Government by the people. Yes, absolutely. नहीं. वो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया? उसी का मॉडिफिकेशन. You can see in the picture. The election process. नहीं. We the people. The concept of we the people, the preamble का concept पूरा वहाँ से लिया गया. We the people of India चालू होता है. और कुछ प्रेसिडेंट का आपने बोला उसको मॉडिफाई करिए. The concept of vice president has been taken from USA. And then what you said, sir, the fundamental rights, all the fundamental rights, ये पूरा उठाया हमने USA से. And the concept of Supreme Court is from USA Constitution. Alright, चलो, Canadian Constitution क्या लिया है? अब ध्यान में आ रहा ना मेहनत का लेवल क्या गया है? Canadian Constitution क्या लिया गया सर? बड़ा मजेदार है. फेडरल सिस्टम लिया है. What is federal system? Anyone? बच्चों? नहीं, बच्चों को थोड़ा छोटी है, ज्यादा छोटी है. बच्चों की मम्मी. What is a federal system? Everyone has heard about this name. States, bureaucratic state. No. State center. No. State. सेंट्रल है, स्टेट. ब्यूटीफुल. एक कैडबरी लो भाई, उसको आज पूरा घर में लेना है. तो तालियां दो, थोड़ा. Very few people know. We have heard about these things, है ना? फेडरल मतलब there is a central government, there is a state government. उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कितना परसेंटेज तुमको पता मिलेगा, क्या मिलेगा, तुम कितने लॉज बना सकते सेंट्रल से अलावा. ये जो भी कुछ है, everything has been taken from Canadian Constitution. What has been taken from Australian? No one knows about this. I tell you, it is a concurrent list. Concurrent list रहती है जिसमें 52 items है या laws है. And these are the laws for very small things. Like forest के laws, wildlife के laws, adoption of the child. तो उसके क्या laws होने चाहिए? बराबर ना? केरला, कश्मीर और कन्याकुमारी में जो वजन है 1 किलो का, वो सब जगह सेम होना चाहिए. 1 किलो. किसी का 1.25 किलो, 1 किलो नहीं होना चाहिए. ये जो laws है ये सब इसमें. This is a list of small laws which govern our routine life. समझ गए? डिवोर्स हो गया तो क्या करने का? ये सब laws इसमें. Adoption of child and so on and so forth. ठीक है? So यहाँ पे ये 52 जो laws है, the state governments have been given the right कि तुम अपने हिसाब से state के culture के हिसाब से बनाओ. समझ रहे? And that is what it is. The concurrent list has been taken, and also everything related to trade and commerce has been taken from Australia. So friend, this is again a historic photograph. Is Baba Saheb Ambedkar here? And this draft, once they prepared it over a period of 8 to 10 months, the drafting committee. अब नाम तो drafting committee का ही आता है, इतना कोई नहीं था उसमें. They presented it to the public. We don't know this.
पब्लिक को 6 से 8 महीना टाइम मिला सब अपने अपने सजेशन भेजने के लिए. वी आर टॉकिंग ऑफ अ जमाना वेयर देयर इज नो व्हाट्सएप, देयर इज नो ईमेल. ओके, सब न्यूज़पेपर के थ्रू होता था. एंड वो पूरा करने के बाद में यू विल बी शॉक्ड टू नो ऑल द सजेशंस वर इन्वाइटेड. Now the Constituent Assembly set for one full year 116 sittings. Each law was discussed one by one, debated and amended. जहाँ पे भी जरूरत थी. एक साल पूरा चीर हरम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट में. इतना मेहनत गया है तब जाके 2500 के करीब पूरे चेंजेस आए. वो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फाइनल बन के आया था उसमें 1 साल लगा. और इसमें पूरा पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक को क्या चाहिए. ये करने के बाद फाइनली 4 नवंबर 1949 को दिस अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट दैट इज राजेंद्र प्रसाद. शोन टू हिम इट टुक 3 years टू प्रिपेयर दिस सादी बुक जो हम उठा के रखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ड्राई है यार, ठीक है, क्या देखने का है. 3 साल लगे इसको बनाने के लिए. इतना पापड़ बेला है सब लोगों ने, इतना पापड़ बेला है सब लोगों ने. एंड देन 25 नवंबर को फाइनली द फाइनल ड्राफ्ट वाज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद. अगले दिन इट वाज अडॉप्टेड. इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है. इसलिए द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज फॉल्स ऑन 26th of November 1949. अभी तक या इवन टुडे इट इज नो आल्सो एज नेशनल डेथ डे. क्या है नेशनल? अरे क्या यार, तोड़ फोड़ दे दो भाई, ये पूरा ले लो तुम, चैप्टर क्लोज करो. एब्सोल्युटली माय ऑनर. प्लीज एक बार जोरदार तालियां. सी इट इज वंडरफुल. आपका संडे बन गया. इट इज आल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे क्योंकि लॉज है ना बहुत. So what happened in the laws which were created by Britishers? क्या? Governors. जो laws Britishers ने हमारे लिए बनाया हुआ था, हाँ. वो कहाँ गए? They were governing us until that time. कहाँ गए मतलब उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट किए होंगे लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट्स हो गए जो करना था. These are pure from the Indian So I standpoint. see amendments of वो sometimes कुछ आए होंगे उसके 1600 के amendment किए हैं करके लिखते हैं. वो लिया होगा तब का. अब नाउ वी नो द स्टोरी ना, ब्रिटिश से इतना सब लिया है, इससे इतना लिया है. दे मे बी आर्केक नाउ, तो वो भी चेंजेस किए हैं. क्लियर ना? ओके. This is how the 4 postage stamps of India were released for Republic Day, 26 January 1950. And this is one special stamp of 26 January 1950, which is a 24-carat gold stamp. 5000 ऐसे स्टैम्प्स निकाले थे गवर्नमेंट ने. एक स्टैम्प का वैल्यू ऑक्शन में 15 लाख रुपया है. 1 सेंटीमीटर by 1 सेंटीमीटर. That is the beauty of it. And this is the 284 Constituent Assembly members who signed the Constitution 1950 में. And signing happened from 24th and 25th of January. 2 दिन लगा सबको साइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को. और ये हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स है सब. And this is how the legal enforcement happened 2 days later, 26 January 1950 को, when it was given back to the public, returned back to the public, and therefore it becomes a republic. Because finally you have my own document, my own laws, and I am self-governed by my own self. Of the people, by the people, for the people. Now becomes true. On 26th of January 1950. अब एक क्वेश्चन. ये तो पहले ही थे. 26 जनवरी क्यों? कभी सोचा 25 जनवरी क्यों नहीं, 2 जनवरी क्यों नहीं, 1 फरवरी क्यों नहीं, ये 26 जनवरी क्यों गिना? कहीं तो कोई रिजोल्यूशन हुआ था लॉन्ग बैक. हाँ, वो तो अच्छा फेंका है, बोलो फेंका अब नहीं. पूरा फेंको. 26 नवंबर को वो हुआ था तो सोचा. तो इसलिए 26 जनवरी. वेरी गुड आइडिया. इतना सिंपल थॉट है, उसके लिए नहीं देते, ले ले बाबा. 26 नवंबर को साइनिंग हुआ था तो 26 जनवरी को कर दिया. बिल्कुल नहीं है देखो, now see, never ever we have thought कि 26 जनवरी क्यों, 15 अगस्त समझा, we know that. कहीं कुछ रिजोल्यूशन हुआ था 26 जनवरी को पहले पूर्ण स्वराज की या कुछ, वो मुझे याद नहीं. अरे तोड़ दिया. क्या बात
पूर्ण स्वराज का जो घोषणा थी घोषणा थी 26 जनवरी 1930 में की गई थी लाहौर के नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस जो था कि इट विल बी टोटल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत रहेगा उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा, उसका पूरा जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमको हमारा नहीं मिलता तब तक हमारा वो पूर्ण स्वराज नहीं होगा, और इसीलिए पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज ओनली आफ्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1930 को किया गया था, इसलिए वो याद करके कि जब रिपब्लिक हो रहा है हमारे खुद के लॉज है, नाउ इट बिकम्स पूर्ण स्वराज, नाउ इट बिकम्स पूर्ण स्वराज एंड देयरफॉर इट इज है ना, लवली ना, मजा आता है ना। अब देखने का पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगा महेंद्र बाबू। 26 जनवरी आ गया, झटा है 26 जनवरी इसलिए चूज किया था, 1930 की बात है, एंड दिस इज अ हिस्टोरिक फोटोग्राफ। सो इफ यू कंपेयर द थ्री ग्राफ्स, ओरिजिनल ड्राफ्ट एक साल के डिबेट के बाद इतना मालूम पड़ना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इतना आना ही चाहिए। Changes. What is the amendment? Change. The law itself is an amendment. What? No, Changing the law is an amendment. What is a resolution? It is passed. Passed. What is a bill? It is the law. Very good. What is an act? चारों चीजें रॉन्ग है तुम्हारे, टोटल रॉन्ग है। चॉकलेट ये मत ले लो वापस। वो लड़की को देना। चलो। Bill is what is proposed, right? And act is when it is finally approved. What is amendment? पहले वहाँ मत जा, पहले ऊपर। Amendment is the changes to the existing. Sir, amendment is when you try to change the articles. Okay. What is a resolution? Resolution would be something that will be passed in the parliament. बिल्कुल नहीं। नहीं, amendment भी तो parliament में ही आएगा। Resolution is decision taken. आपने amendment रखा, उसको pass Decision taken. Decision taken. resolve that करके बोलते हैं ना। प्रपोज किया अपने क्लब बाइलॉस के लिए Resolved. See, resolution has to be attached to an article. Final It's a kind of announcement of decision that are taken. It can be. बिल्कुल। Is it the language used, actual sentence change? Written amendment recorded. अभी adopted. नहीं amendment the very thought, चलो हमने क्लब बाइलॉस को ले लो, क्लब के अभी कमिंग प्रेसिडेंट बोलेगी दिसंबर में कि भाई मुझे ये चीज नहीं चाहिए, चेंज कर। The very thought of changing, it means I want. Now what actual change I want to change when I write it, it is an amendment. Yeah, it is a resolution. I have written it down. 24, 25 में ये था, 25, 26 में ये रहेगा। तो I written, हाँ, propose नहीं किया अभी, but this is the change written down. That is a resolution which I will propose to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Then it is called as a bill, and if it is passed, then it is called as an act. Clear? So amendment मतलब the thought कि I want to change something. Resolution means actual writing of the thought, whatever is the change. Bill means presentation to the Lok Sabha and the Rajya Sabha to debate and to, if it is passed, it becomes an act. Who does the resolution? ये सब members करते हैं sir. I want to change. Even the citizen can do that. The constitutional remedies का fundamental law है अपना. Are the members of parliament? There is a procedure. You can apply, then it goes through the MP. They pass put the amendments and accordingly. उसका पूरा protocol ही है, procedure ही है. What is so unique about this constitution of ours is also one thing. Hold your breath and you'll be shocked to know, friends, that it was never published. It was never published. It is handwritten and it is with calligraphy. Can you beat this? इस बात पे तालियां होनी चाहिए अपने constitution. This is the cover page of the constitution with calligraphy and illustrations. अरे रुको बोलने दे। This is what we have never been told. We'll be shocked that this person, anyone by any chance, Calligrapher.
नाम बोलो। सर नाम तो नहीं पता लेकिन आधा चॉकलेट देते बाबा। ले ले। ठेका लेकिन बहुत ही कहाँ तो बैठा फाइनली। मैंने हौसला अफजाई के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। यू आर नॉट गिविंग इट अप। उसके लिए मिला। ये भाई इतना चारों चीजें रॉन्ग बोली थी उन्होंने। अमेंडमेंट रिजोल्यूशन तो भी चालू का चालू। इतना फिर वो हिम्मत के दांत तो देने पड़ेगा। इसलिए इनको बाईपास चेंज करने के लिए नहीं दिया। इनका नाम तो नहीं बताया बट ये शायद शांति निकेतन से जुड़े नहीं वो दूसरे। गांधी जी के राइट हैंड। वापस दे दूंगा चॉकलेट। कंट्रोल कुछ भी फेंकने का इधर भी कैसा भी। तो ही इज प्रेम बिहारी राजदा सक्सेना। He is the one who was appointed to do the calligraphy and he gave a very unique proposal to पंडित नेहरू। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे खाते पीछे घर का हूँ, मुझे कोई I will not charge anything for the calligraphy of the Constitution of India. But I have a request. I have a request अरुणिमा कि मेरा जो लिखना होगा हर पेज के एंड में मेरा नाम होना। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे दादा का नाम होना। क्योंकि जो भी कैलीग्राफी मैंने सीखी है वो मेरे दादा से सीखी है। I have no parents, they died early. I was totally brought up by my grandfather and he taught me calligraphy. He was from a family of calligraphists. And that request was granted by Pandit Nehru. This is one example. You can see. Right. Every page has this name in the original constitution. This is the calligraphy of his. This is our constitution, the original constitution. This design you are seeing, आपने जो बोले शांति निकेतन आ रहा है ना? So this what Saxena Sahab used was those who love calligraphy they know this. They know this कि ये निब्स होती है 303 नंबर की निब होती है, इंक पॉट रहता है, उसमें डुबा के लिखते हैं। Each and every page has been written down और उसमें एक भी मिस्टेक हुआ तो टेयर करो, वापस से पूरा करो। This is what has been done, and then he was given a room in the Constituent Club of India. Constitution. Yeah, these are the 2 rooms for him. He was there for 6 months doing this job without any pay. The only धारस was कि मेरा नाम रहेगा हर पेज के नीचे। कितने पेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन? I am coming to that. And friends, yes. बोलो कौन है? इतना लिखा तो है उसमें। नंदलाल बोस। हाँ, करके बोलेंगे। 2 artists were taken from Shanti Niketan. One was a Padma Vibhushan Acharya Nandalal ji Bose. वो लेवल के कैलिबर के लोग थे जिन्होंने ड्राइंग्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द अदर वन इज हिज डिसाइपल राम मनोहर सिन्हा। एंड नाउ होल्ड योर ब्रेथ बॉय, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हर पेज के ऊपर जो ड्राइंग हुई है लिखने के बाद में, हर पेज पे उसको एम्बॉस किया है विद 24 कैरेट गोल्ड। विद 24 कैरेट गोल्ड। दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने टिक सकता। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना 1 से 10 नंबर है, 11वें नंबर से सबका शुरू होता है। Constitution of India stands from 1 to 100. Next constitution comes on 101. And unfortunately, we are not knowing this. Each and every page has a gold pattern over there. This is one example. See this. जितना भी गोल्डन दिख रहा है आपको, एक डिजाइन पहले निकाली गई नंदलाल जी बोस और से राम मनोहर सिन्हा से, और उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड के ब्रश से पूरा एम्बॉसिंग किया गया। This is our constitution. Absorb करो, see the symmetry of the design, see the borders. ऐसा हर पेज पे क्या है, एक मिस्टेक हुआ फाड़ो, फिर वापस से करो। That has what has been done, and this is the final product. This is the final product. This is the emblem. ये भी पूरा निकाला गया है, embossed with gold. And this is the index, and this is how. These are the signatures. Enjoy this page. See the border. Intricacy देखो. See the symmetry. And see the 284 signatures. This is how it looks. These are the original pictures taken from the Constitution, back borrowed and stolen. I had to spend 6 months to get these pictures from the archives of India. और वो इतना easy नहीं है,
क्योंकि इतना लिथार्जी है ना, अपने इतना एपैथी है ना, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। कहाँ का तो खरीदना पड़ा कुछ फोटोग्राफ मैंने क्लिक किए हुए, और कहाँ मिल गए, थोड़ा दया माया सब संभावना से मिल गए, लेकिन पीछे लग के डॉक्टर वो काम में बहुत आया मुझे, ये डॉक्टर क्यों मांग रहा है, तो थोड़ा सा बंदा एटलीस्ट सुन लिया हो, फिर 2-3 लोगों से फोन करवा के ये करवा के कुछ चीजें तो डायरेक्ट खरीदनी पड़ी। Why did the topic come to you? I come to it. And then this is one major mistake happening here. सिग्नेचर जब चालू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने फट से जाके पहले अपना सिग्नेचर कर, because it was a breach of protocol. President was Rajendra Prasad. His signature was to be there first. तो उन्होंने यहाँ पे साइन किया। तो आज भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। In published constitution you will never find this. वो चेंज किया गया है। This is what has happened. So you can see the symmetry, enjoy the illustrations. And this is the preamble. Accept करो। क्या लेवल है यार? देख तालियां है अपने preamble के। ये लेवल की symmetry है, ये लेवल का किया है। This preamble took them 10 days to prepare. 10 days to prepare. This is how राम मनोहर सिन्हा का भी यहाँ पे नाम लिखा है। जहाँ illustrations है वहाँ पे। Can you read that preamble? बाद में आता हूँ मैं उसका। I'm coming to that. So let us see the illustration. There are 22 illustrations. I am presenting to you all the 22 illustrations after a method of hard work of 6 months. तो ये feast है, enjoy कर लो, देखने को मिलेगा नहीं, पक्की बात है। कुछ मिल जाएंगे definitely, not all. लेकिन जो 3-4 चीजों के लिए जितनी मेहनत लगी वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 में अब जितने भी illustrations हैं, they try to put it in such a way कि correlates with the text. So chapter 1 has this seal. Anyone? कहाँ का है? ये तो हार्दिक को हिस्ट्री में सिखाया है। बाजू में? नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। मोहनजोदारो है? हड़प्पा। अब क्या है? सील का नाम क्या है? What is this seal? It's a world famous seal, right? कौन सा बुल? Very good, very good. It is a Zebu bull, Harappan seal. It was put on the first page of, first part of the section. Why? Because it was sealing the relationship between the union and the territories, between the union and the states. With that understanding, it was put. Then what is this? अरे ये क्या है? हाँ, is Ram, and the photo of Ram, picture of Ram, Lakshman, Sita is there on the page of fundamental rights. Ram Rajya. है ना? Now this is Krishna and Arjun, and what is he explaining? Bhagavad Gita. यहाँ पे भगवत गीता कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा? Which we have discussed, the directive policies and principles of the state. तो directives of life भगवत गीता है, directives for the country. तो वो चैप्टर जो है वहाँ पे वो टिपिकल कोरिलेट होता है। That is the metaphoric. This is Buddha. See the boundaries. Symmetry देखो। एक पेज 6 महीना लगा है भाई पढ़ा करने के लिए। This is Mahavir. This is Nataraj. And where is the biggest Nataraj statue in India? No, it was. Now it is not there. अभी हुआ G20 के वक्त याद है न्यूज़? तब तक चिदम्बरम का स्टैचू was the biggest. G20 कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम। एक चॉकलेट दे दो उनको सर को। क्या बात है? तो भारत मंडपम में हुआ था। This is the statue. तो दोनों मिला के सभी ले लेंगे। This is the statue. 27 feet height है, world का tallest नटराजन का स्टैचू है। G20 समिट में भारत मंडपम में लगाया गया। It is made of अष्टधातु का बनाया गया है। स्वामी मलई विलेज में तंजावुर में 10 करोड़ रुपया लगा था। स्वामी मलई में क्यों किया गया? क्योंकि that place is known for its metal work. ओके, और वहां से 18 टन का ये स्टैचू 36 टायर के ट्रेलर में रख के दिल्ली तक लाया गया, इंस्टॉल किया गया। मालूम होना चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, है ना? एंड दिस वाज डन बाय द स्थपति फैमिली। उनका 36 जनरेशंस आर इनटू दिस ओनली, एंड दे आर डूइंग दिस सिंस चोला पीरियड। तब से उनका जनरेशन चल रहा है, ये कर रहा है।
और उन्होंने जो मेथड अपनाई, जो पहले का मेथड था, विच इज द लास्ट मैट्रिक्स कास्टिंग मेथड, वो मेथड अपनाया। और उसका जो मट्टी होता है मोल्ड बनाने का, वो कावेरी बेसिन में एक पर्टिकुलर जगह है कावेरी नदी में, वहीं से वो मट्टी मिलती है, एलुवियल सॉइल विच दे यूज टू मेक द मोल्ड, एंड दैट इज हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ दिस लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजन इज देयर इन इंडिया। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर? दिस इज अ पिक्चर ऑफ सिटीजनशिप। हमारा सिटीजनशिप का जो चैप्टर है उसमें सबसे बड़ा पिक्चर इसका क्यों लिया है? बिकॉज इट इज द गुरुकुल सिस्टम व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडिया, एंड सो दे शोड द गुरुकुल सिस्टम, हाउ द सिस्टम ऑफ हॉर्स इन कोणार्क सन टेंपल 13th सेंचुरी। ये भी डाला है बिकॉज हॉर्स इंडिकेट स्ट्रेंथ, एंड दिस वाज टू डिपिक्ट द स्ट्रेंथ बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। सो दिस इज अबाउट द स्टैच्यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये दिख रहा? Strength of the horse, see this and see this. Clear? Yes or no? Yes. This is Bhagirath's penance to bring around the Ganga. World's largest monolith statue sculpted in the whole world. अलोरा। बिल्कुल नहीं। ये दीवार से लेके ये दीवार तक ऐसा एक ही सिंगल रॉक का पूरा बनाया है। अरे ये देखा नहीं है? मरने के पहले पक्का देखना है। I can cross will not die before seeing this. नालंदा। बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा स्टैचू रॉक है पहाड़ का, सिंगल रॉक पे पूरा बनाया गया है। आपने तो देखा ही है दोनों ने, आपके एरिया में। महाबलीपुरम, यूके, चेन्नई। This is how it looks. सिंगल रॉक का स्टैचू है। It is 96 feet wide and 43 feet in height. Single rock monolith statue in the whole world. This is how it looks. ऐसा प्राइड आता है ना यार कि क्या है हमारा इंडिया। ऐसे लोग थे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? Now who is this? This is Emperor Ashok and the monks. So it is a symbol कि भाई past culture and present culture are fused together. Similarly, the ethos of the states and republic is fused together. कोई past में चल रहा, कोई present में है. This is how it goes on, and that is how it has been represented. This is Emperor Vikramaditya of Ujjain. He started the Vikram calendar, the संवत जो हम लोग करते हैं. After defeating the Shaka, the Iranian people, उसकी वजह से क्या हुआ? Total territories अपने पास आई, जितनी भी बिखर गई थी. And because it is a territorial thing, the chapter of territories में his photograph is there. So Emperor Vikramaditya उज्जैन का ये स्टैचू सबने देखा होगा, उज्जैन गए होंगे तो, है ना? This has been recently installed about 30 feet in height, the biggest statue of any individual raja in the country. This is how it looks. ये मजा है, इंडिया में है, बहुत कुछ मिलता है देखने के लिए. And then this is Akbar. He has been put in the chapter of services because he was large enough to employ all the faiths. जिसके भी बेस्ट लोग हैं सब faiths के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो. तो सर्विसेज के चैप्टर में एम्परर अशोक है. शिवाजी महाराज is in the chapter of elections because of the fairness of elections and because he could form that mandal. कौन सा था? Ministry शिवाजी महाराज का. हाँ. बाहर की बात ज्यादा फट जाता है। क्या? अष्टप्रधान मंडल, एक मिनिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है मेड बाय शिवाजी महाराज, मालूम होना चाहिए। इट्स रॉन्ग नॉट टू नो. फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फेयरनेस ऑफ गवर्नर्स. सिमिलरली, हु इज दिस विद द सेम कॉन्सेप्ट इन नॉर्दर्न इंडिया? गुरु गोविंद सिंह। हाँ, गुरु गोविंद सिंह. तो इन दोनों का भी फोटो है. Then there is Lakshmi Bai in Tipu Sultan also. Lakshmi Bai is there in the special provision because of her being special, the only lady freedom fighter to be there in the constitution. ठीक है? And then of course he is there. He is there in the provisions because emergency provisions जो होता है, तो हमें emergency में independence चाहिए, तो इनका वहाँ पे डाला गया. He is at two places. But there is one more freedom fighter and the only other freedom fighter to be drawn in the constitution. कौन है? लोकमान्य तिलक. नो. सरदार बोस. नो. अनफॉर्चुनेटली नो. आपने क्या बोला? इधर सरदार, इधर बोस. अच्छा, सरदार. मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल समझा. एक सुभाष चंद्र बोस. यू आर राइट. सुभाष चंद्र बोस और गांधी, they are the only two.
Okay, and then this is Abhinav Gupta from Kashmir Shaivism. He is Acharya Abhinav Gupta, and he is the one who has written the Tantra Loka, which is a very famous book. Those who are interested in reading, they should know about Acharya Abhinav Gupta and his Tantra Loka. So इतना बढ़िया representation सब country का हमारे constitution में किया गया. This is not Hanuman ji. Anyone who is it? This is गंधर्व. ब्रह्मा जी के जो लड़के माइथोलॉजी में जो है सेलेस्टियल सिंगर्स एंड डांसर्स, तो उनके बारे में दिस इज अ सील, वेरी फेमस सील ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑफ, अब समझ जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी. दिस हैज बीन आल्सो पुट एंड दिस इज हिमालयाज बिकॉज़ इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, तो उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है. एंड देन फाइनली दिस इज द लास्ट वन. व्हाट इज दिस? कोलंबस. कोलंबस सी रूट से आया होगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रहेगा? उसका डाला. अरे कैसा है ऐसा? फिर देखो फेंकना, लेकिन बाजी फेंको ना, कितना लंबा फेंका. प्रैक्टिस कर रहे थे आप. आपने फेंकने को ही बोला. अरे वो ऐसा आड़ा टेढ़ा, अरे बॉल आया बाउंड्री पे तो विकेट की तरफ ही फेंकेगे ना, तुम तो स्टेडियम के बाहर फेंक रहे हो. विवेकानंद. एक कोलंबस ने हिंट दिया है उन्होंने अपने आप में कैसा है. दिस इज राम सेतु. This is Ram Setu. How long it is? Ram Setu का length कितना है? 48 kilometers. This is how it has been represented. है ना? Just 5 minutes more. 5 minutes more. And this is the emblem of our country. And this is the original emblem. Now it is in the Sarnath Museum. 3rd century का है. आप देख सकते हो वहाँ पे गए हो तो. And now the original manuscript is there to last for 1000 years. उसमें से अभी सिर्फ 75 years हुए हैं. और इसका जो पेपर है, how many pages are there? Now pages are 233 pages. Source of paper is from Birmingham. And कितना वजन है? Yes, madam. 5 किलो. बस. Yes, it is 13 kilos. Constitution हमारा 13 किलो का है भाई. And the unique record we have is it is the world's longest constitution with 1,50,000 words nearly in it. And it is also the world's second longest active constitution in the world. ठीक है? There are two. This original copy has to be not preserved for 1000 years. तो कैसे करते हैं मालूम है? Constitution अपने पार्लियामेंट का जो लाइब्रेरी है उसमें रखा है. And this is filled with helium. Helium gas में. Sometimes nitrous oxide is also used. And this is how it is done. You must have noticed there are two books. Why? One is the original, one is the modified. Handwritten, huh? Modified. दोनों नहीं हो सकते. ये पूरा मॉडिफाइड फाइनल हुआ तब बनाया गया. एक ही हैंडरिटन होएगा ना. तो दो क्यों है? Again a shocking thing, the same thing has been reproduced in those 6 months in Hindi. तो पूरा हिंदी में संविधान है and it has been done by Mr. Vasant Vaidya. He wanted to remain anonymous. There is nothing on Vasant Vaidya. कहाँ से है, कौन है, कैसे दिखते हैं, and these 2 copies were signed by the 284 members. This is how it looks in Hindi. The pages are more in Hindi because the Hindi words are longer. तो 30 pages बढ़ गए इसमें, तो 264 pages है. पूना में एक research laboratory वहाँ से वो pages लिए थे, and the weight had therefore increased by 1 kilo, and then it is 14 kilos. Super, super. माने this is a ultimate to have. It can be printed. Only 1000 copies have been printed, and this 1000 copies कहाँ है, किधर है? Collector's item है सबके पास में. सिर्फ ऑक्शन के लिए आती है. And this was done in Dehradun Survey of India Printing Press. And today, 3 months ago, it was auctioned. One of the copies was auctioned for 48 lakh rupees. No, it was a published name, but as it is. As it is. Okay, coming to quickly to the preamble. Preamble जो है ना first page होता है, introductory page. जैसे कोई भी book में forward होता है, तो we have to understand what it is. In a constitution, it means the source, we the people of India. तो बुक का सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया है. बुक का नेचर क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक है. एंड बुक का ऑब्जेक्टिव कोर क्या है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है. एंड बुक को कब एडॉप्ट किया गया है? तो वो एडॉप्शन का डेट. दैट इज. सो नाउ वंस यू सी द बुक यू रियलाइज हाउ टू लुक एट इट. है ना? एंड दैट इज हाउ इट इज. अमेंडमेंट एज समवन सेड, अमेंडेड हुआ है 3 इमरजेंसी के वक्त. देयर वर 3 वर्ड्स व्हिच वर एडेड इन द इमरजेंसी पीरियड. 2 वी नो, sovereign and secular and socialist. The third word is secular was also
ये सेकुलर सोशलिस्ट 2 वर्ड ऐड किए थे, एक और वर्ड ऐड किया है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी, ये पूरा डिबेटेबल है, वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, माने दैट इज अ टोटल टॉक ऑन इट्स ओन। So now, do you agree that this is the personality of its own? Do you agree it has its own charisma? People have married around the constitution. अभी तक 25 marriages हो चुकी है around the constitution, particularly for girls. Why? Because of the concept of equality and freedom, which is so clear and loud in the constitution. And so, friends, umbrella cannot prevent the rain, but it can protect you from the rain. तो हमारे यहाँ रेन एक ही है, स्टॉर्म एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब झगड़े जो है, और then it is like a boat. It will help us sail over a shallow personality which we carry along with us. और हम लोग इसमें लगे हैं, तो it will help us to be aware and beware. भाई हमें हमारा चीज का वैल्यू आना चाहिए। Some feel it is dividing, but it is not about division. It is all about how we come together. If you go through it, then you realize that. नहीं तो ये लोग रूल करेंगे, है ना? करेंगे. So people have expressed their love and pride for the Constitution in their various ways. ये सैंड आर्ट फेस्टिवल नवंबर-दिसंबर में होता है, उसका एप्लीकेशन ओपन हुआ है अभी, किसी को करना है तो जा सकते हैं करने के लिए. People have done this in their various ways, and it should not be a simple observation of a day. It should be a festival to celebrate. It should be an utsav to celebrate. है ना? And therefore, it is not what you look at that matters. It is what you see in what you look at that matters. Isn't it? It is what you see and what you look at that matters. And that is what my whole aim was. Thank you so much, President.